Good afternoon, you're watching NDTV 24/7 and the big story that we're tracking at this hour, 2 people killed at least and at least 5 injured in a Naxal attack on a train. Naxals attacked the Dhanbad-Patna Intercity Express near Kundra just before the Jamui railway station. It is in fact close to the Jamui railway station, and there were CRPF security forces as well as railway protection forces, Jawans who were escorting this train. In fact, police say that one of the reasons for the attack could be to snatch arms and ammunition from the escort Jawans. And right now, it seems that there is a standoff. There's an ongoing firing which is going on between the two, the Naxals and the armed forces who are on board. Currently, it seems that the situation is very, very tense. And on your screens, you can see the area where the train has been attacked. It is in the heartland of Bihar, heading towards Jharkhand. This is the Dhanbad-Patna Intercity Express near the Kundra halt before the Jamui railway station. In fact, between the Kiul and Jamui railway stations. And with the security forces present there, the question right now is that what is happening? Let's go over now to Manish Kumar, who joins us for more details on what's happening. Manish, tell us, what details do we have about what appears to be an ongoing clash after this train was attacked? Kajuri, according to the information so far available in Patna, that this attack took place sometimes around 1 o'clock in the afternoon when this train, Intercity Express, was coming from Dhanbad to Patna. This incident just took place before Jamui railway station. There is a halt, Kundra halt, and there, this Naxals, over 100 in numbers, they attacked. And their main target was, because they knew, they had this intelligence that this train has a lot of RPF and GRP Jawans escorting this train. So they wanted to loot the weapons. Initially the attack started, these Naxals were also inside the train and they had a very good cover from outside this train. First they stopped this train and after that they started attacking this GRP and RPF Jawans. In that there was some firing also took place. One RPF Jawan has succumbed to the injury inside the train, and there's one passenger also, we are getting the information, who was also killed in this and fighting. Manish, I'm going to have to interrupt you for just a moment. We will come back to you as soon as possible. But right now speaking, Minister of State for Home RPN Singh, let's listen in. हम पूरी जानकारी ले रहे हैं। वहाँ हमने CRPF, BSF और RPF के और रीइंफोर्समेंट्स भेज दिए हैं मौके पर, और जैसे पूरी जानकारी मिलेगी हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। नहीं, बिल्कुल नाकाम नहीं है। ये मैं समझता हूं कि हमने जो सफलता नक्सलवादी के खिलाफ पाई है, ये उनको बैकफुट पे जो किया है, उनके ये जैसे जो इन्होंने नए तरीके और जिस तरह की ये आम आदमियों पर अब उन्होंने वार करना शुरू किया है, जिस तरह नेताओं पर उन्होंने वार करना शुरू किया है। आज तक तो नक्सलवादियों को हम देखते थे कि सिर्फ वो पुलिस कर्मियों पर और सरकारी बिल्डिंगों पर हमला बोलते थे। अब बेगुनाह नागरिकों पर उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया है, ट्रेनों पर हमला करना शुरू कर दिया है, और तमाम आम आदमी जो घटना छत्तीसगढ़ में हुई थी। तो मैं समझ सकता हूं कि एक बौखलाहट नक्सलवादियों में है। हमारा जो रिजॉल्व है इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का, हम करते रहेंगे। पर अभी तत्काल जो जरूरत है कि जो ट्रेन में लोग सफर कर रहे हैं उन तक हम तत्काल राहत पहुंचा सकें, हमारी फौजें वहां पहुंच सके और लोगों को राहत तत्काल मिल सके। ये पहली बार देखा गया कि नक्सली आर्म्स छीन रहे हैं, वो छीन के उनको घायल भी कर रहे हैं, और आर्म्स छीन के सबसे उनका पहली प्रायोरिटी यही हो रही है कि आर्म्स जितने ज्यादा इकट्ठा कर सके। हाँ, हथियार छीनने का उन्होंने किया है, क्योंकि हमारे जो जवान हैं उन्होंने एक कोशिश की है, सरकार ने एक कोशिश की है, जो ये आर्म्स इन लोगों को, और आर्म्स और एम्यूनेशन बहुत आसानी से पहले मिलने की एक कोशिश होती थी, उस आर्म्स और एम्यूनेशन को रोकने की कोशिश सरकार ने बड़ी कोशिश। हमला तो बेसिकली जो हथियार छीनने के लिए जो आरपीएफ के लोग हैं उनसे किया है। एक हमने देखा है कि नक्सल में जिस तरह सरकार कामयाब रही है हथियार रोकने में, उसी तरह मुझे लगता है नक्सलवादियों को अब दूसरे तरीके अपना रहे हैं हथियार वापस लेने के लिए और हथियार लूटने के लिए।
परंतु एक बहुत दुखद बात यह है कि उन्होंने अब आम नागरिकों पर हमला बोलना शुरू कर दिया है, ट्रेनों पर हमला बोलना शुरू कर दिया है, राजनीतिक दलों पे हमला बोलना शुरू कर दिया है। परंतु हमारा जो रिजॉल्व है नक्सलवाद के खिलाफ, जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, जितने सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, हम उन कदम को अवश्य उठाएं। It is extremely unfortunate that the incident that is taking place in Jhabua at the moment. It is the frustration of the Naxal people, because the arms and ammunition is something that their sources have dried for that. But it is unfortunate that now they have started attacking innocent people, started attacking trains, and they have even started attacking political rallies and destroying and killing people in a very barbaric manner. We have already rushed CRPF, BSF and RPF personnel to the where the incident has taken place. It is unfortunate that we have come to know that the driver has already been shot. Some people have been injured, but we are waiting for more information. But our first priority is to make sure that our forces reach there and all the people traveling on the train can be secured and safe.